Hey, so no plans at open. Was wanted to first see how 1 hour closes or breaks 17th high or low, and it was an inside bar, so did not really have any plans in the morning. No, very poor volumes in Nifty, and Bank Nifty also didn't really have any good volumes. Also, in my last video, I had mentioned that I look for a short in Bank Nifty below shorting opportunities below 4270 if it crosses. That did not happen. So it bounced till probably 2 o'clock. It was roaming below VWAP, but after 2 o'clock it bounced from that level and almost gave 150-200 points. So did not take the buy position I wanted to short, and did not take the short position because the candle did not close below this level. Will I short tomorrow? Maybe, I don't know. I'll again look at what this does. If this candle breaks, if 1 hour candle closes below today's low, I will look for shorting opportunities in both Bank Nifty and Nifty. So that is my tomorrow's plan. What is my plan in Nifty? So I gave one, I think I got the timing right, but the candle positioning was not right. If you check out my system trade, today's system trade basically was if 115 is above VWAP, not touching VWAP, sell below 115, and it was a scalp shot. I wanted this to be here so that I can do a scalp shot with a VWAP cross, but it actually gave good scalping below 115, but I did not really take this because of the structure. So did not trade this, because they did not trigger, and this I'll probably have an opportunity tomorrow. Let's see. Thank you. तो कल का वैसे ही कोई प्लान था नहीं, जब तक मैं चाहता था पहला 1 आवर कैंडल क्लोज हो या फिर इस 17 के नीचे या 17 कैंडल के हाई के ऊपर, और उसके बाद मैं डिसाइड करता, लेकिन वैसे ही इनसाइड बार रहा वो आज भी, तो कोई ट्रेड का कोई प्लान था नहीं. एक ट्रेड और दिया था मैंने बैंक निफ्टी में, जो कि ये था कि 4270 के नीचे अगर क्लोज होता है कैंडल तो मैं शॉर्ट करूँगा, और अगर आप देखें तो पूरे दिन उसने कुछ नहीं किया और 4270 के ऊपर ही घूम रहा था, और वहाँ पर जब आया भी तो भी उसने एक बाउंस मारा वहाँ से. 4270 लेवल है क्या, वो बेसिकली 17th कैंडल का लो नहीं है, 17 कैंडल का पहला कैंडल है, पहले कैंडल का लो है 3 मिनट्स का. 17 का लो और भी नीचे है 41,850. तो कल का प्लान ये है कि मैं अगर आज का लो 1 आवर क्लोज आज के लो के नीचे क्लोज होता है तो मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखूँगा दोनों बैंक निफ्टी में. और निफ्टी में आज सिस्टम ट्रेड में मेरा टाइमिंग सही था. अगर आप मेरा सिस्टम ट्रेड अगर आपने देखा है, यूट्यूब में डालता हूँ मैं और बाकी सोशल चैनल्स में भी डालता हूँ, तो उसमें एक ट्रेड ये था कि 115 नीचे बेचूंगा, स्कैल्प ट्रेड रहेगा, VWAP ब्रेक, अगर 115 VWAP के ऊपर है, टच नहीं कर रहा तो वही हुआ, स्कैल्प सेल हुआ 115 के नीचे. बस यही था कि कंडीशन मीट नहीं हुआ, पोजीशनिंग में ये VWAP पे था और इसीलिए मैंने ये ट्रेड लिया नहीं. थैंक यू.